भरोसा, आम जनता और पुलिस के बीच रिश्ते की नींव। इस सोच के साथ केरल पुलिस ने एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डॉक्टर बी संध्या के नेतृत्व में शुरू किया जन मैत्री प्रोजेक्ट। जन मैत्री ये तो केरला गवर्नमेंट का कम्युनिटी पुलिसिंग प्रोजेक्ट होता है और इसमें जन से हमेशा संपर्क होता है पुलिस लोगों का। हमारे कांस्टेबल, इसको हम बुलाते हैं बीट कांस्टेबल और एक वनिता पुलिस कांस्टेबल, और दोनों मिलके हाउस टू हाउस विजिट करते हैं। महीने में एक बार निश्चित स्थान पर जनता के साथ मीटिंग की जाती है और फिर पुलिस थाने में भी जन मैत्री समिति की मीटिंग होती है। मीटिंग में मुख्य रूप से स्थानीय सुरक्षा संबंधित विषयों पर बातचीत की जाती है। Gender related issues like eve teasing in while they are going for taking a bath, even that they will discuss sometimes. Traffic problems. 2007 में राज्य स्तर पर बैठक बुलाई गई जिसमें सभी राजनीतिक दलों ने भाग लिया और न सिर्फ शासक बल्कि विपक्ष दल ने भी जन मैत्री सुरक्षा प्रोजेक्ट के प्रति सहमति प्रकट की। 5 years is over. 2008 March we launched officially. That was only in 20 police stations. As on today we have started in 248 police stations. लेकिन शुरुआत में यह रास्ता इतना आसान नहीं था क्योंकि सदियों से जनता में पुलिस के प्रति गहरा अविश्वास जो भर गया था। But I remember in 2009, 2-3 ladies came to me and told, "Madam, we want to tell you something very personally, but we will do it after the meeting." I got so tensed, but after the meeting, these ladies came and told me that, "Madam, we want these beat constables of ours to be there at least for 3 more years. With their presence, it has brought so much of change in our lives. Please don't change them. Please don't transfer them." By 3rd year, every MLA wanted a Janamaitri police station at least in his constituency. That is why we had to start in 106 police stations at a stretch. 2010 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान देश विदेश के पुलिस प्रतिनिधियों ने इस प्रोजेक्ट की सराहना की। We could also share with them our experiences, their experiences. That also from that we learned. इस प्रोजेक्ट का प्रभाव यह भी हुआ कि आम लोगों से अपराध संबंधित खुफिया सूचनाएं मिलने लगी। Once I was inspecting a police station when I was range IG, and I saw while browsing through the crime records that some gang has done housebreaking in 28 instances within 10 months. We could catch this gang only because of Janamaitri. This Janamaitri beat constable, while visiting some houses, some ladies told this lady constable that they have a doubt regarding a plumber who is visiting their house. So this lady constable passed on this information to the SHO. They started watching and this gang was caught. See, this simple information came from housewives. Even in areas like communal conflict, we have been able to make a dent. There are a few instances in which Janamaitri police detected the need for an eye operation, need for a house and things like that. यह प्रोजेक्ट इतना प्रभावशाली हुआ कि राज्य में सरकारें बदली लेकिन प्रोजेक्ट बिना किसी रुकावट के चलता रहा और बाद में पुलिस एक्ट का भी हिस्सा बना। Now the community owns this project. It is not anybody, one particular person's project. There are many officers now who could take this up. So this concept has to come at least slowly into our country. That only will make our internal security problems, all other internal problems. We cannot solve any Naxalite problem with empty number of weapons, empty number of training courses. So mutual trust, that is the basis for policing.